Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting with John Donne today. So John Donne was from the school of metaphysical poetry, and he was the most prominent figure from metaphysical school of thought. He was a love poet, a divine poet, and a metaphysical poet. तो इसकी ये तीन traits बनती हैं. ये metaphysical poet भी था, love poet भी था, और divine poet भी था. So this is brief about John Donne. He was an English scholar, poet, soldier, and a secretary born in a Catholic family, and a remnant of the Catholic revival, who reluctantly became a cleric in Church of England. He was Dean of St. Paul's Cathedral in London. He is considered the preeminent representative of the metaphysical poets. So he was born in 1572 and died in 1631. This is important about him. Even his spouse, Anne More, she is also important because most of his poems are referred to her. And these are the names of his kids: Lucy Donne, Constance Donne, Frances Donne, and more. There are so many. And he studied in University of Cambridge, Hertford College, and University of Oxford. John Donne's works are noted for their metaphysical and sensual style, and that includes sonnets, love poems, and his religious poems. He's also worked on Latin translations, epigrammatologies, songs, and satires, and also is known for his religious sermons. Since his later part of his life till his death, that was devoted to God and to religion. Now, he was born in London, and his father was a prosperous merchant, and he was having a good family structure. But his father died, and then his mother, she was also she was daughter of a literary person who was an epigrammatist and a playwright, John Haywood. In 1584, Donne matriculated from Oxford, and then it was impossible for a Roman Catholic to take oath in supremacy of that was required at graduation, so he left without taking a degree. As we know, in those days, whenever there were Protestants ruling, so Catholics were not given chance to get into any favorable thing, whether a job or studies. So he had to forsake his degree. Studies इसकी पूरी हो गई थी, degree ये नहीं ले सका. Oxford को छोड़ के Cambridge में आया. Then he studied law, and then he went to Lincoln's Inn for law practice in 1592. In 1596, now this is important for him, that he was, when he returned from his enterprise with Essex, Earl of Essex, he became secretary to Sir Thomas Egerton, the Lord Keeper. So this was good for him. लेकिन उसके बाद ये क्या होता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड की तरफ ये इसका माइंड जरा डेवलप हो गया और इसने कैथोलिक फेथ छोड़ दिया. So he became a Protestant. The thing which changed his life was in 1601 he fell passionately in and seriously in love with the Anne More. She was a young niece of the Lord Keeper, जिसकी हमने बात की अभी, and she was merely 16 then, एक minor थी. तो उसके साथ जब इसने शादी की, so for the case of marrying a minor or without guardian's consent, तो उसने एजर्टन इसको डिसमिस कर दिया और उसको फिर पता लगा कि उसकी वाइफ को डाउरी भी नहीं मिलेगी. So this was a crucial time for John Donne. Again, his marriage did not prove successful. This continued, लेकिन उसमें जो भी थोड़ी सी एक expectations का खत्म होना, that came, despair was there, and he also wittingly wrote a letter to his wife in which he wrote, John Donne, Anne Donne, undone. So this is very famous phrase that he said. उसकी जो जॉन डन की हर तरह की पोम्स में मेजर जो वर्क है उसकी सोनेट्स का है, वो लव पोम्स हो या होली सोनेट्स हो. सो उसमें उसने सोनेट्स ज़्यादा लिखी, लेकिन उसकी जो लव पोम्स हैं दे आर मोर सेंटर्ड ऑन हिज
वाइफ एंड मोर, उसके बारे में ज़्यादा इसने बात की। दिस इज हिज टाइमलाइन। इसमें जो रेड हैं colored, they are important कि he goes to Oxford in 1584. In 1592 he is admitted to Lincoln's Inn for law, and then he became a member of parliament in 1601. Adjutant की सर्विस से 1602 में हटाया गया, और क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। 1606 में ये प्रोटेस्टेंट बन गया। 1609 में इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन द एक्सपायरेशन केम इनटू बीइंग or to screen in 1611, like Ignatius and then Conclave and the first anniversary ये इसने publish की। 1614 में again he becomes a member of parliament, or and then 1615 royal chaplain ये मुकर्रर हो गया religious order में। 1617 में चाइल्ड बर्थ के दौरान इसकी वाइफ की डेथ हो गई। 1622 में इसके जो फर्स्ट 2 डन sermon वो इसके पब्लिश हुए। मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। काफी जो इसके काम था उसकी मौत के बाद पब्लिश हुआ। So these are the important collections of poems by John Donne जो कि मशहूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो इसकी मशहूर है वो इसकी poems हैं itself. So John Donne was a metaphysical poet. So metaphysical poet is a term coined by poet and critic Samuel Johnson, who describes a loose group of English lyric poets of 17th century whose work was characterized by ample use of conceits, guess and speculations about the topics such as love, religion, etc. Now this etc. is very important. हम इसको ETC पढ़ देते हैं. This is etc. ये लैटिन टर्म है। एट रेत, सेट पहाड़, रॉ भूसा, यानी इधर उधर की चीजें, यानी वगैरह वगैरह, इसलिए हम इसको यूज करते हैं etc. Same is the case with EG, that stands for exemplary gratia. So metaphysical poet वो थे जिन्होंने conceits यूज की बहुत ज्यादा। इनकी speculations थी, philosophical वर्क था, platonic वर्क था, religion और love के ऊपर इनका बड़ा काम था। These poets were not formally affiliated, जैसा मैंने बताया कि कोई proper group नहीं था। Most of them did not know each other or each other's work, पढ़े भी नहीं होंगे, मिले भी नहीं होंगे, लेकिन on the whole generally, since they were following the same school of thought, के extremely intelligent, witty, or about ironical views about something, religion, about love, तो ये सारी इस common themes लेके चलते थे। अब जो इनके थीम्स से इसमें स्पिरिचुअल पोइट्री थी, रिलीजियस थीम से लव पोइट्री थी, यूनियंस ऑफ सोल यानी प्लेटोनिक लव के, फिजिकल लव की तरफ ये कम ध्यान देते थे, एक स्पिरिचुअल लव की तरफ इनका फोकस होता था। जो लिटरेरी डिवाइसेस ये यूज करते थे उसमें मेटाफर्स, पन्स, पैराडॉक्सेस एंड मीटर्स टू क्रिएट ड्रामा एंड टेंशन, और उसमें फिर साइंटिफिक मेडिकल वर्ड्स ये वो यूज करते थे, मैथमेटिक टर्म्स यूज करते थे जो कि फॉर फेच्ड इमेजरी है, रिलीजियस चीजों को ये लव से इंटरमिंगल करते थे। नाउ दीज वर द पोएट्स जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल थे, अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़े हुए थे। अनक्लैरिटी इज अ मेजर फीचर इन दैम, किसमें एम्बिगुअस एंड ऑब्सक्योर चीजों को ये यूज कर जाते थे, क्योंकि उसके अंदर लाइक मेटाफिजिकल मींस बियॉन्ड फिजिकल, तो वो उस हवाले से कुछ ऐसे रेफरेंसेस कोट करते थे जिसको पढ़ने के लिए एक बंदे की अच्छी लर्निंग जरूरी है, वरना ये क्योंकि रिनेसेंस का स्पिरिट इनके ऊपर भी हावी था, तो इनकी लर्निंग के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का तड़का होता था, इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेवल्स, क्योंकि रिनेसेंस का एसेंस था ट्रेवल की बातें होती थी, न्यू नोन और डिस्कवर्ड एरियाज को डिस्कस किया जाता था, मैथमेटिक्स और साइंटिफिक चीज़ों को, रिलीजियस चीज़ों को, कॉनोटेशंस को यूज़ किया जाता था प्यार मोहब्बत के इश्यूज से इंटरमिंगल करने के लिए। शॉर्ट पोइम्स थी, ज़्यादा लेंथी वर्क्स नहीं थे, अनलाइक एलिज़ाबेथन्स और उनसे पहले फॉर्मर्स जितने भी पोइट्स थे, एपिक्स वगैरह ये वो, सो इनके टाइम में इन्होंने बहुत शॉर्ट किस्म की पोइट्री की।
और उनकी जो पोइट्री है, इट इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मैक्सिम्स एंड सेइंग्स, जस्ट लाइक फ्रांसिस बेकन इन प्रोज। ये पोइट्री में एपिग्रामेटिक स्टाइल यूज करते थे, यानी कोटेबल स्टाइल, जो कि शॉर्ट बट फुल ऑफ मीनिंग, या फुल ऑफ डीपर मीनिंग्स। तो जॉन डन इस लिहाज से पायनियर था। अब मेटाफिजिकल कंसीट्स क्या थी? A conceit is a comparison of two dissimilar things which may have very little in common. कि अब वो इसमें जॉन डन की भी पोइट्री भरी हुई है इस चीजों से, और उसके रेस्ट ऑफ द कॉन्टेम्परेरीज वो भी इस चीज को डील करते थे कि इनकी पोइट्री में जो रेफरेंसेस थे वो उनको इंटरमिंगल करते थे। मैंने पहले बात की थी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सो इन पे चार्ज था कि मेटाफिजिकल पोइट्स यूज डिसयूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। So T.S. Eliot said that this is not disunification, rather that is unification of sensibility. Maxims are quotable quotations, equalizary. So ये जो disunification या unification of sensibility वो किस तरह था? वो इन conceits के वाले से इनको चार्ज किया गया disunification का। For example, in one case, in one poem, John Donne talks to his wife, एक monologue type है जिसमें वो उसे कहता है कि अपनी मोहब्बत को या अपनी वाइफ को और खुद को एक कंपास से, एक पुरकार से तशबीह देता है। तो अगर आपने बचपन में ड्राइंग्स की होंगी, आपको पता है जब हम पुरकार को एक पेज में लगाते हैं तो उसका एक एंड खुल जाता है, वो एंड राउंड मूव करता है, और वो परफेक्शन तभी होगी जब वो जो स्टिक एंड जो जिस पे नोक लगी होती है वो अपनी जगह पे परफेक्ट रहे, हिले नहीं। तो दूसरा जो राउंड है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करके बंद कर देते हैं हम इन द एंड उस कंपास को। सो इसको इसने किससे तशबीह दी कि तुम अपनी वाइफ को कहता है जब ये ट्रैवल पे जा रहा होता है और वाइफ रो रही होती है, तो ये उसे कहता है कि तुम वो स्टिक किस वाले नॉब हो और मैं वो मूविंग नॉब हूं जो कि घर से बाहर जा रहा है ट्रैवल करने के लिए, कमाने के लिए। वो घूमेगा फिरेगा, वो अपना सर्कल तभी पूरा कर पाएगा जब तुम उसके साथ ट्रू रहोगी। तुम थोड़ी सी अपनी जगह से हिलोगी तो मेरा भी सर्कल खराब हो जाएगा। तो जब कंप्लीट सर्कल करने के बाद दोबारा जैसा प्रकार इकट्ठी हो जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ आके इसी तरह मिल जाऊंगा। अब ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट को उसने मोहब्बत से तशबीह दी और एक अच्छा कनेक्शन दिया। फिर असहाबे कहफ का वाकया सुना, आप लोगों ने सुना हुआ है। 7 स्लीपर्स डेन, यानी 7 स्लीपर्स बाइबल में भी हैं, तो ये उसका रेफरेंस देता है मोहब्बत में कि जिस तरह वो 7 स्लीपर्स से असहाबे कहफ थे, वो इतना अरसा, एक लंबा अरसा सोते रहे, और जब वो उठे तो दुनिया बदल चुकी थी। और जब वो उनको यानी लगा कि असल हकीकत तो हमारे ऊपर अब आया हुई, तो जॉन डन उसी रेफरेंस को यूज करता है कि हम उन 7 स्लीपर्स की तरह सोए हुए थे उस टाइम से पहले जब हम एक दूसरे को मिले। तो मिलने के बाद बेसिकली हम पे हकीकत आया हुई कि असल जिंदगी तो हमारी अब शुरू हुई है एक दूसरे से मोहब्बत करने के बाद। सो ये उस रिलीजियस रेफरेंस को उसने किस तरह एक इंटरमिंगल कर दिया लव अफेयर में। So this is unification of sensibility according to Eliot, or according to rest of the critics, it was disunification of sensibility. So ये जो unification of sensibility है, इसमें यही far-fetched ideas हैं, ये कंपास की एग्जांपल देना, hurricanes की एग्जांपल देना, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज की एग्जांपल देना, ये 7 स्लीपर्स 10 की एग्जांपल देना। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको वो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से अपने लव अफेयर्स के तौर में, मेटाफर्स के तौर पे यूज करते हैं। Now they were original poets. इन्होंने कॉपी नहीं किया, इन्होंने अपने प्रेडिसेसर्स को अपने से पहले आने वालों को उसमें उनके स्टाइल को नहीं अपनाया। एलिज़ाबेथन पोइट्री को उसके जो टर्म्स थी, उसके जो रेफरेंसेस थे, उनको लेके ये लोग नहीं चले। इन्होंने अपना एक अलग स्टाइल डेवलप किया। विट बहुत ज्यादा काउंट करती थी। दे वर हाईली लर्नड एंड विटी पीपल। जॉन डन को मोनार्क कहा जाता है विट का। प्लेटोनिक लव इज अनदर थिंग कि ये दोनों ये पोइट थे, ये ज्यादा प्लेटोनिक लव पे बिलीव करते थे, यानी स्पिरिचुअल लव, यानी फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है। तो ये बिलीव, इसकी एक पोएम थी जिसमें वो कहता है कि हम दोनों अगर मर जाएं तो हमें एक ही कब्र में दफनाना चाहिए, यानी वो अपनी वाइफ के बारे में कहता है। तो जब हम एक कब्र में होंगे तो इवन डेथ इज नो डिवोर्स। दिस इज वेरी फेमस सेइंग बाय जॉन डन, that death is no divorce, कि मौत भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। Now, John Donne's love poetry. So, love poetry of John Donne is having 3 strands. 3 इसके parts हैं।
अब उस लव पोइट्री में बेसिकली ही फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स पोम्स अबाउट हिज गॉड, जो कि लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उसने लिखा। फिर उसकी लव पोइट्री प्राइमरीली और पैशनेटली जो बेस्ड है सीरियस, उसकी जो सोनेट्स एंड पोएम्स, वो उसकी मिस्ट्रेस, उसकी वाइफ एन मोर या एन डन, उसके बारे में। और फिर लव में जो एक और वो जो एक एंगल पेश करता है वो सटायर एंड डिसलॉयलिटी, वो सटायर करता है डिसलॉयलिटी ऑफ वुमेन पे। सो जॉन डन्स की जो जॉन डन की पोएम्स हैं, व्हेन वी रीड देम वी कम टू नो दैट व्हेनेवर ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलव्ड, he is feeling that only she is fair and loyal. Rest of all the women of the world are disloyal. क्योंकि उसकी बहुत सारी पोइट्री है जो रेस्ट ऑफ द वुमेन पे है, डिसलॉयल्टी पे है। Go and catch a falling star. Now this is a poem by John Donne, very famous and very short poem, जिसमें वो कहते हैं कि आप टूटा हुआ सितारा पकड़ लोगे, यानी दिस इज इम्पॉसिबल आप कर सकते हो। मैंड्रिक रूट से बेबी की प्रोडक्शन हो सकती है, हालांकि वो प्लांट है। आप मरमेड को सिंगिंग करते हुए सुन सकते हो, हालांकि मरमेड एग्जिस्ट नहीं करती। डेवल्स के फुट को देख सकते हो, हालांकि डेवल को कोई नहीं देख सकता। यानी हर इम्पॉसिबल चीज हो सकती है। इवन आपके पास ऐसी साइट हो कि आप इनविजिबल चीजें देख सको, और आप बड़े कोई मिस्टिक बन जाओ, आपको 1000 दिनों की लाइफ दे दी जाए, 1000 सालों की, आप जाओ ट्रेवल करो, और ट्रेवल करके जब आप आओगे बताओगे दुनिया में आपने बहुत सारे अजायबात देखे, लेकिन आप कसम खा के कहोगे कि आपको दुनिया में कोई भी लॉयल वुमेन नहीं मिली। तो अगर मिलेगी भी, एक आदि मिल गई तो मुझे बताना, मैं उसे देखने जाऊंगा। उसको देखना हज के बराबर होगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुमकिन है तब लॉयल हो जब तक वो आपने उसे देखा, लेकिन जब तक आपने मुझे खत लिखा, मैं उसे मिलने गया, तब तक वो 3-4 दफा डिसलॉयल हो चुकी होगी। सो दिस इज व्हाट ही फील्स about rest of the women, but when he is talking about his own wife and mistress, उसके लिए उससे ज्यादा अच्छी लॉयल ऑनेस्ट खातून नहीं है। Then his divine poetry, he writes holy sonnets for God, और जिसमें better my heart, free person God, और उसमें एक spiritual love हमें नजर आता है जो कि खुदा के लिए इसके दिल में है, जिसको ये फील कर रहा है। और अक्सर सोनेट्स में इस तरह की बात करता है कि मेरे अंदर डेवल है, तो गॉड से रिक्वेस्ट है कि गॉड उस डेवल को निकाल के इस प्लॉट पे अपना घर तामीर कर लें, या खुद इस जगह पे मेरे दिल में बस जाए। सो दिस वाज जॉन डन एंड हिज लव एंड डिवाइन पोइट्री। सो इसकी जो पोएम्स हैं, सिलेक्टेड पोएम्स आर वेरी फेमस: एनिवर्सरी, ड्रीम, Go and Catch a Falling Star, The Sun is Rising, Twickenham Garden, A Valediction, Forbidding Morning, A Valediction on Weeping। तो ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, तो हम अगर उनकी समरी पढ़ लेंगे सो दे आर बेटर। इनके इसके जो फेमस कोट्स हैं इन पोम्स में से, वो मैं आज आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट the metaphysical school of thought was.